leading entering a new sector where I don't see any other women around. With English journalism, मुझे हमेशा लगता था कि कोई अगर if I would have some woman to guide me and take me through, it would be easier. So ये gender segregation तो था उस वक्त हमारे ऑफिस, अब तो हैं, there is a female office right now with Arab News. उस वक्त जब मैं जाती थी तो they were all my male colleagues, and I was only like going and visiting for the meetings over there. And working from home, ये जो अभी कोविड का स्ट्रक्चर आया है for all the school teachers and the students, so this has been my working ground since 2011. और ये जो 2011 से अब तक की जर्नी, ये सारी जर्नलिज्म मैंने घर के अंदर से की है, कनेक्टिंग पीपल वन बाय वन, पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जर्नलिज्म में आपको लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, लोगों की बाइट्स चाहिए होती है, ओपिनियन चाहिए होती है, एंड जितनी न्यूज आ रही होती थी वो बोथ साइड से, आई कुड नॉट कनेक्ट टू द मैन अराउंड, एंड मुझे भी डर लगता था कि मतलब आई वाज नॉट श्योर कि ये आगे के लोग कैसे हैं, एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में लोग कौन हैं, और जैसे एम्बेसी टू एम्बेसी, डिफरेंट फॉरेन एम्बेसीज जाती थी, अर्जेंटीन एम्बेसी, इंडोनेशियन एम्बेसी, तो ये सब जगह every sector was an alien sector, मतलब new sector for me, not alien, rather it was a new venturing into complete unknown. But एक strength थी कि my husband was always there by me. तो एक था कि communication possible नहीं थी to get the opinions, और आप अगर सऊदी मैन को तो अप्रोच करना हमारे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, एक सोशल इनहिबिशंस भी थी, खुद में मेरी भी इनहिबिशन थी पर्सनली, तो आई यूज्ड टू पुट माय हस्बैंड फॉरवर्ड कि यू आस्क दिस, एंड देन आई यूज्ड टू लाइक जस्ट टेक दैट नोट्स, और कई दफा सऊदी एम्बेसीज में, मिनिस्ट्रीज में फोन करते, एसएफडीए में जैसे किसी ड्रग रिलेटेड इशू पे किया था, तो दे हर्ड अ वुमेन्स वॉइस एंड दे यूज्ड टू पुट द फोन डाउन, मुझे बात ही नहीं समझ में नहीं आता था, लाइक हाउ टू लाइक टेक द ओपिनियन एंड पुट द पोल्स, एंड दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो है बहुत ही मेजर इशू था. अल्हम्दुलिल्लाह अब वी हैव उबर, करीम और इस तरह के ट्रैवल एप्स, द नॉर्मल limousines are still running, and women are also like availing the opportunity to get their own driving licenses. I don't have personally, inshallah I'll get my driving license because it's need of the hour. तो उस दौरान जैसे मैं प्रेफर यही करती थी कि कोई असाइनमेंट मिली और my husband is not there, I had to deny the assignment, like I would not prefer to go on through a hired taxi to an unknown. तो थोड़ी स्लो गई मैं, बहुत स्लो, I was working very slow, but with all respect and dignity, and only the places where my husband was available I used to cover news, because एक security मुझे भी थी और मेरे husband को भी थी कि now we are together, and even if she's doing her work, nothing, and alhamdulillah I find it all a very safe zone. हमारी अपने अंदर की डर थी, if I, as a journalist, I have ventured to different events or venues, so these are all educated women and educated men, so there were all these leading ladies who are there, and I was so amazed to see these women, क्योंकि हमें भी इल्म नहीं था कि ये सऊदी जो है women जो है अबाए के अंदर कैसी हैं, are they aware, are they educated. So when we realize कि हम जब अच्छे फैमिली से होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बड़े शहर में भेजते पढ़ने. Saudi women, they all are accomplished women coming from accomplished families. They are all foreign educated, most of them. And when they come, they are highly aware. और इनकी जो normal, local, common housewives भी, they are all aware on an ultimate level. So if you talk to them in one sentence, they will tell you where you are or where they are. So it was like an opening window to a world जो मुझे like वो intrigue करता रहता था, to enter, penetrate more, और जाके देखूं क्या है, what is there. I think it was a golden key, जैसे Arab News जैसी golden चाबी थी. Event to event में I was exposed to the different strata and the different layers of the society,
मैं पहले तो Hmm. कम्युनिटी लेवल की न्यूज़ करा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल एम्बेसीज करे, वहाँ से एक लेवल अप थोड़ी सी Hmm. और मेहनत करे, फिर ये the Shura, I met a lot of Shura Council members and talked to them and exchanged their views Hmm. about the Saudi women. And एक लेवल पे आए जब आप elite events जब cover Hmm. कर, like I shared that Arab Women Awards was one event that I can never forget for a lifetime. My usually the crown on my journalism days is that Arab Women Hmm. Awards, because that was a time under the patronage of Princess Rima, and she's the granddaughter of King Faisal. And she was leading the Arab Women Awards. And Hmm. in on one event, I could Hmm. see all these leading ladies. Of first director, movie director, I met Haifa Al Mansour, and I met Sara Attar, the athlete who was the first Olympian. And then I met Sumaya Jabarti. She's the Wow. first female journalist, editor in chief of Saudi Gazette. I met these prince and Miss Lina Almaina and Miss Amani Fatani. Miss Amani is the wife of Khalid Almaina Sahab, the former chief editor in chief of Arab News and Arab Saudi Gazette. And Lina Almaina is a Shura Council member, and Hmm. she has her own basketball team, Jeddah United and Riyadh United, that her sister takes care. All this, it was all a story in, like I Hmm. say, kitab khul gayi ho, and I'm listening, seeing and meeting different stories, and everything is coming out like about one personality, their lives and their accomplishments, why they were there. So ऐसा लगा कि एक a big mix of treasure box में मुझे, I'm also one pearl among them. So it was a very beautiful opportunity of exposure through journalism, that I could see this level only through the benefits of education, working hard, persevering through my journalism, leveling up at every stage. So this is my story. That what pushed me to. So, what, which one personality inspired you most among these all beautiful ladies? I think I've not met the entire clan of these aspiring leaders, the women Saudi role models, but among the few that I think all these women that at that level, they had exemplary stories of bringing about a change in society in the kingdom, like Princess Amira Al Tawil, the former wife of Mr. Walid bin Talil. So Talal, sorry, Walid bin Talal. Okay. Mrs. Princess Amira, she is like one lady who led the change for women to drive, and she brought about the awareness on the international fronts through her interviews with the CNN, BBC, all the international media. Now we can know how it was the first window that I came to know when the princess was talking about how Saudi women are misrepresented by the Western media. What is the actual status of Saudi women? Mhm. And the other story, I always fondly talk about Princess Rima bin Bandar Al Saud. Now she's the current ambassador, the first female ambassador from Saudi Ambassador Arabia, of Saudi. Washington D.C. in U.S. So I have seen her taking striding steps at every bend and every corner, bringing about change for women empowerment, pushing the women to come out and do more. And I witnessed that story about the Harvey Nichols, which was under her company, Alpha, Alpha, Alpha International. So she was Hmm. so saddened, and like she felt it so at heart that she had to remove all the men from the sector of the cosmetics and allow the female Saudi nationals to take over that job. She said that it was painful for me, but I asked the Ministry of Labor to absorb them. So I was heard that they had families running back there, but I had to do that for my women, my country. So Hmm. she cushioned it up by supporting those men back, and that was a drive that was required to bring about Mhm. empowerment of women, that we see that women are there out today in all sectors, at the cashiers, at the retail, at the corporate level, as lawyers, as sports persons, as women in the media and film.
So the whole industry, all levels of the society is now embracing women, and they are proving their worth. They are worthy of and deserving of where and Mm-hmm. how they're performing through their example, through their strive. So I think Princess Rima is one I would credit, and Miss Lina Al Naina So, as well um, for हाँ, sports. हम्म, अ, अच्छे अच्छे लोगों से और अच्छे एम्बिशन और अच्छे पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों से जब आप मिलते हो तो आप मोटिवेटेड ज्यादा फील करते हो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केप्ट यू गोइंग व्हाट मोटिवेटेड यू थ्रू आउट द योर जर्नी क्या वो एक चीज थी जो आपको एक तो आपने कहा कि आपको कीड़ा था जर्नलिज्म Yeah, का एक passion. आप you're meeting with men with beautiful personalities what another thing you can include in this Another thing is more on a selfish level for my women, for the women that from where we become from the Asian belt, from India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, and the women that I had left behind back home to send down our stories of inspiration, to bring about a change for our women, hmm for the future of our girls. Because the Saudi women, the princesses, they don't need to come out and hmm work, but they are doing it to bring about a change for their women. So in our subcontinent, it is leaders like you, people like hmm me, and people who have proven their worth, who are there at equitable positions, to bring about open doors, lead way hmm for the coming generation. So it is our responsibility to exactly pave way for the next gen of girls. And I think every woman who's out there striving, you, Maha, sitting in your seat, I in my level, and any other woman who's even doing a home-based business or coming out to the school to teach. They are doctors in different at all levels of the society. So they are doing their best, giving back to the society. We are all there to make a social impact, and that is the need, that hmm is our hmm responsibility that Allah has entrusted us with. exactly exactly Can I share exactly a little about so you were telling me you did it twice we will come to this story or part of your story yeah, where you rather thrice, three times. I think like the first yeah was sure before that. I Shazin already shared that story that since you grade. did twice you twice Yeah, yes just twice I think one was a yes story of my as a student, as a little girl, aspiring to get become the school captain, games captain one day when I grow up, and my strive. And just that year that I was supposed to get my badge, I had to pass it on like that position. My fellow friend had been appointed. Second was like from there after hmm Hindustan Times, working very hard, establishing relations and contacts, and making a mark for myself. I had started my own event management company, and started it very hmm small from a stay camp, 6 day, 7 day stay camp for almost 100 kids at us our base. Like वो movie आप सबने देखी होगी, कुछ कुछ होता है the summer camp. So my first event was also hmm titled कुछ कुछ होता है the summer camp, and from there on I had leveled up. I was hmm the Eastern Region Coordinator for ESPN and Star Sports School Program. ये जो दो कंपनी थी उन्होंने टाई अप किया था to popularize FIFA and soccer in our country. So hmm northern region, south and eastern region, I was there managing over around 100 schools to hmm like उनकी bulletin boards पढ़ती पढ़ती थी, और ये जो hmm stars हैं उनके माराडोना और जितनी उस वक्त मुझे अब याद भी नहीं है, it's been so many years. um, आर्सेनल टीम थी, hmm स्पेन, रियल मैड्रिड, एंड ये सब जो है इनकी प्रमोशंस होती थी. तो दैट वाज द लेवल आई वाज एस्टैब्लिशिंग कांटेक्ट विद hmm द स्कूल्स, एंड देन व्हाट इंडिया लाइक वी रियलाइज कि ये अब एड्स जो है दिस विल मूव आउट ऑफ इंडिया. तो ये जो कंप्लीट hmm डिफरेंट स्ट्रक्चर पे आईपीएल मैचेस पे वही फॉर्मूला आ गया कि क्रिकेट के ही क्लब्स बन गए, कि कोलकाता नाइट hmm राइडर्स और रॉयल राजस्थान रॉयल्स एंड
ये जो हुँ। different category. So I जी, जी, feel जी। proud that I was part of that history in making also in India. So सही। Alhamdulillah, by that time I was in Saudi. So that was a moment where I had like मैं रांची में थी and I was very excited कि people in Delhi know me and they are entrusting Eastern region की responsibility on me. तो ये वाओ! एक लेवल जब आप अचीव कर लेते हैं तो उसको लगता है कि मैंने जूते घिसे हैं तो कुछ काम आ हुँ। तो एग्ज़ैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह I was established and I could had so much contact. मैं घर से फोन पे से काम करवा सकती थी, लाइट हुँ, टेंट स्टेज पीपल वॉलंटियर्स जो दौड़ने वाले भागने वाले सब कुछ हुँ, हो जाता था। तो बट ये कि अम्मी ने कहा था, वन ऑफ माय टीचर्स आल्सो, and with all due respect, I just give credit to all the teachers who have been behind me, mentoring me and building me up. कि बेटा you have achieved what a girl of your beyond what a girl of your age could have achieved. Now you have to focus on your family. You're married. Attention हमेशा ये दो कि जो हासिल है आपकी जिंदगी का वो हुँ, आपके बच्चों तक वो आगे बढ़े. हुँ, So for that you have to focus on your family. So it got that got very deep into me that I said now I'm fulfilled, I'm satisfied with, I've proved myself. That was the second break. That वहां से छोड़कर सब कुछ शटर गिराकर जिस दिन शटर गिरा रही थी अपने ऑफिस की तो बहुत रो रही थी कि मुझे सऊदी जाना, आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, कंप्लीट जीरो, कंप्लीट नथिंग. तो वहां से एक सेकेंड ब्रेक था. फिर यहाँ पर सऊदी में आए, एज आई शेयर कि पहले टीचिंग किया एक स्कूल, दो सेकेंड स्कूल विथ माय फर्स्ट डॉटर्स एडमिशन, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी टू राइट फॉर अरब न्यूज. अब ये अरब हुँ, न्यूज में जब मैं थी एंड आई वाज स्केलिंग वेरी हार्ड, वो जो स्ट्रगल फेज होता है इट इज नॉट गिविंग यू रिटर्न्स एज मच, बट आपकी वो डेज जो है आपको सिखा कुछ बहुत रहे होते हैं. यू आर बीइंग हुँ, एक्सपोज्ड टू एवरी लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन द completely different society and in a हुँ, completely different regions. तो वो जो है हमारे हस्बैंड की जो है पढ़ाई है, ही इज अ डॉक्टर, ये ऑलवेज इज स्टडिंग हिज ऑन हिज पर्सनल लेवल. तो उनको मुझे जहाँ भी जाती थी मैं, वो उनको साथ जाना होता था. वो मैं जा हुँ, सकती थी लिमोजिन से, लेकिन आई इट वाज एवरी सेक्टर एवरी डे. इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर जॉब कि आप लिमोजिन फिक्स कर लिए, टैक्सी फिक्स कर लिए, एक हुँ, ड्राइवर आपको वहां पे एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग ले आए. इट्स अ डिफरेंट जॉब, इट्स अ डिफरेंट प्लेस, इट्स अ डिफरेंट वेन्यू एंड डिफरेंट पीपल एवरी डे, ऑन एंड हुँ, ऑफ. तो ये जो मैं मेरी डिपेंडेंसी इनके हस्बैंड पे थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड द होल टाइम ही यूज टू स्टे देयर. जॉब से आए बेचारे थक कर, ड्यूटी दे रहे हैं, वो खड़े हैं, मैं कवर कर रही हूँ. और ये मुझे एक टाइम ऐसा है कि आई फेल कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और अब ना ही नीड्स टाइम टू स्टडी फॉर हिमसेल्फ. तो ये जब रियलाइजेशन होती रही तो मुझे लगा मैं भी एक रेगुलर जॉब में आ जाऊँ, टीचिंग में आ जाऊँ वापस. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एंड आई हैव डन आल्सो एज़ टू माय कैपेसिटी, जितनी अल्लाह ने कुव्वत दी थी और जितनी एक इज़्ज़त के साथ जो मुआशरे में एक तब्दीली लाना या मैसेजेस लाना, शेयर करना, एंड टू नो मोर सो दैट आई कैन बी एबल टू टेल मोर स्टोरीज़ हुँ, बैक होम टू माय पीपल, हुँ, कि ये हुँ, इस्लाम है और ऐसे हैं, ये फंक्शन करते हैं. एंड दिस इज हाउ द सऊदी वुमेन आर, दे आर हुँ, अचीवर्स एट ऑल लेवल्स, एट इन डिफरेंट कैपेबिलिटीज. तो हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि हुँ, हमारा कंट्री, हमारी दीन जो है, वी हैव अडॉप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया. उनकी कल्चर्स हमने अपनाई हैं, तो इस बिल्कुल, एस्पेक्ट को भी, इस लीडरशिप को भी हम अपनाएं. दिस इज द बिल्कुल। मैसेज, दैट इज माई की पॉइंट, कि हम all these Saudi princesses, they don't need to work. They are accomplished females. उनको पैसे हैं किसी चीज, but they are out there working hard to prove a point, to live up their patriotism or the need of their nation, help in the nation's drive, whatever हुँ, is under everyone's capacity. हम क्यों बैठे रहते हैं? हुँ, हम, हमारे अंदर वो कुव्वत अल्लाह ने दी है. क्यों नहीं है? हुँ, Different persons with different capabilities, different हुँ, qualities, through which we can utilize in service of our society. हुँ, अल्लाह ने हुँ, जो बोला आपके सामने कर दी, बस जैसे कहते हैं इस्लाम में सरेंडर कर दो. हुँ, Surrender yourself in service of that uh, option whichever Allah has planned for you. हुँ, नहीं, किसी कुछ लोगों को अल्लाह ने होम मेकर्स बनाया है, तो उसमें अल्लाह की क्या मसलहत छुपी है?
What एग्जैक्टली। information through that job that Allah is taking, Allah knows. We have to हाँ, be true and sincere हाँ, through every role that Allah has guided us through. ये हमारे अंदर से calling आती है. We see a हाँ, vision and हाँ, अपने आप जिंदगी वो रूट बना लेती है. Now, when एग्जैक्टली। I got today, if I got an opportunity to serve the community through media, now I see the connection. वो जो है ना कि milestones को connect करते हैं, तो हमने देखा कि हम तो हम्म, excited कॉलेज में मुझे मतलब it was only fun. लेकिन how हम्म, this led to service to the society if I'm here in Saudi Arabia एग्जैक्टली। in a very critical position, not critical like it's like so it's a larger message if we give from here. हम्म, एक एक इफ यू नो मिस उमर इब्राहिम फातिमा हम्म, अनवर, मैंने कहा था एक दफा मुलाकात हुई थी उनके इवेंट में, तो मैंने बोला एक एक बच्चा जो यहाँ पैदा हो रहा है हमारी तरफ, या एक एक एक्सपैट्रिएट जो हम आए हैं अपने मुल्क को छोड़ के, वी आर ऑल एम्बेसडर्स, एग्जैक्टली। ambassadors to take a larger message back home. People look up to us. हम्म, पीपल हैव उनको क्या हंगर होती है, हम इज्जत देते हैं, हम जाते हैं घर वापस, क्या क्या उम्मीद रहती है कि कुछ सीख हाँ, ले, हम हाँ, खाना उनको हाँ, नहीं खाने या खर्च नहीं पूरे कोई कर चीज नहीं सकते, दे, वो हाँ, इस बात में शौक से मोहब्बत देते हैं कि हमसे कुछ एग्जैक्टली, अच्छाई जो हम यहाँ की लेकर जा रहे हैं उससे एग्जैक्टली। उनको कुछ या मुआशरे को कुछ हम दे पाए, तो ये एक जिम्मेदारी होती है. सही, तो ये सही। थर्ड पॉइंट था जब हमने हासिल करके अपने शौहर की पढ़ाई के लिए आई लेफ्ट, बट आई डेंट लेट इट लूज. उस वक्त था ये लम्हा जो 3 साल मैंने ब्रेक लिया 2016 के बाद, 16 17 18 2019 आई केम बैक अगेन विद अल बिलाद. सो ये हम्म, 3 साल मैंने अकम्प्लिश किया, मास्टर्स इन जर्नलिज्म, अपनी पढ़ाई कर ली पूरी. मैंने एडमिशन हम्म, लिया शादी के बाद हम्म, यहाँ आके, तो कर नहीं पाई हम्म, थी. तो आई हम्म। यूटिलाइज दैट पीरियड वेयर ही यूटिलाइज इट फॉर हिज एकेडमिक्स, आई यूटिलाइज फॉर माई एकेडमिक्स. अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक नेक्स्ट चैप्टर सो वो शुरू हो. जो एक 2011 का टाइम था और अब जो 2021 का टाइम है, डिफरेंस क्या है आप उस जर्नलिज्म में और आज की जर्नलिज्म में? आपको क्या वही डिफिकल्टीज आज भी फेस करनी पड़ती हैं? बिकॉज सऊदीया इज चेंजिंग नाउ। Now Saudi is changing with the social media. I think we were also exposed to how the other, पहले हमारे पास access नहीं था कि हम दूसरे की stories हमारे तक आसानी से आ जाती. Now at the click of a button we are exposed to different Facebook groups, different social media, different profiles on Facebook, through Twitter we see, we are हम्म, exposed to a lot of other women, if I'm talking हम्म, only about women, जो और भी अकम्प्लिश्ड है, मतलब अपने अपने लेवल पे देयर इज अ लेवल ऑफ women who have proven themselves on different हम्म, scale. तो हम्म, ये चीज एक्सपोजर होने से हमें भी हिम्मत मिली, हम भी और मोटिवेटेड हुए, एंड वी हम्म, फेल दैट द बर्डन इज नॉट सो हैवी. एंड हम्म, इफ वी शेयर स्टोरीज, इफ वी ज्वाइन टुगेदर हैंड इन हैंड, हम मिलकर वी कैन इंशाल्लाह। सपोर्ट ईच अदर, सिस्टरहुड जो बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। सिस्टरहुड सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम सब अपनी जिंदगी जी रहे, सबकी किस्मत अल्लाह ने पहले लिख दी. हम्म, हैंड इफ वी होल्ड टुगेदर, we can just be an inspiration and support कि हम हैं, साथ हैं. एग्जैक्टली, There are people, there एग्जैक्टली। are women backing us up. We are cushioned. We don't need to fear the world, whatever challenge is coming in our way. तो ये एक मैसेज भी है कि we women should seek strength from women around. एग्जैक्टली यही तलाश का भी जो है मोटिव हमारा, अगर आपने देखा हो, दैट इज हेल्प ईच अदर ग्रो। यानी एक दूसरे को उठाते हुए चलो, यानी खुद भी उठाओ, दूसरे को भी उठाओ। वो कहते हैं ना, आप किसी को दबाते हो आप उसके साथ नीचे खुद भी दब जाते हो। सो लिफ्ट ईच अदर अप एंड गो, मूव Rise मूव, and shine. राइज एंड शाइन। Every time यस, you fall, मेरी स्टोरी से यही है ना महा, मैं बताती हूँ कि एवरी टाइम अल्लाह ताला एक लेवल पे ले आते हैं, फिर ब्रेक करते हैं. That you एग्जैक्टली। take, rise again. You rise हम्म, again, Allah will break you, but He's trying to mold you to यस, become stronger and reach higher. And then एग्जैक्टली। again, with Arab news, after Arab news, I will share the next chapter in my life, which is coming from to the social activism. हम्म, ये जब हमारा जब एक अल्लाह ने इज्जत दे दी, एक नेम एंड रिकग्निशन मिल गई, तो एक जिम्मेदारी ये होती है कि आप उस नेम एंड रिकग्निशन का क्या इस्तेमाल करेंगे, हम्म, हम्म, उसको कैसे यूज करेंगे. एंड इट शुड नॉट बी, हम्म, आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं. हम्म, इट इज अ पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल रिक्वायरमेंट, जिसकी जी जिंदगी बिल्कुल, जिसको बात करती है, अल्लाह बिल्कुल। ताला जिसको जैसे आगे लेके जाए. तो उस
after I came back with Al Bilad, I was always on a lookout कि एक सेक्युलर सी एक कम्युनिटी ड्रिवन ड्राइव मुझे अल्लाह ताला हेल्प करें कि जिसको मैं सपोर्ट करूं. तो दो ड्राइव हुँ, मैंने अडॉप्ट किया थ्रू joining a school as a goodwill ambassador with a United Nations recognized NGO. So I support twice weekly to go that to Allahabad International School. Syrian बच्चे हैं जो हुँ, इवनिंग में क्लासेस करते हैं, दे कांट अफोर्ड द रेगुलर इंटरनेशनल स्कूल्स. तो ये हुँ, शाम हुँ, को इवनिंग में ये वहाँ पे स्कूल में जाते. और आई ट्राई टू टीच देम इंग्लिश. कहीं ना वाओ! कहीं इंग्लिश उनको तो काम आएगी ना. वाओ! whatever I can support. So through my goodwill ambassadorship with SPMUDA, then I utilize that to teach the Syrian kids जिनके पेरेंट्स जो है एक इवनिंग स्कूल में डाल के उनको तालीम कंटिन्यू करना चाहते हैं उनकी. And second was like for my like you give back to the place you belong, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है ना अपने लोगों पे वापस रीच आउट कर जाए. हुँ, तो हमारी सेकेंड ड्राइव थी कि हमारे सऊदी में हमारे स्टेट झारखंड का कोई भी चैप्टर नहीं था, कोई हुँ, एसोसिएशन नहीं था. हुँ, हुँ, और बिहार जो है हमारा बिहार फाउंडेशन की दो चैप्टर्स थी, बिहार अंजुमन, बिहार फाउंडेशन, बिहार की हुँ, चैप्टर थी. एंड हुँ, people from all states have their organization, especially Kerala. I think someone told me at a recent event 200 से ज्यादा organizations है हमारी. So and Kerala is established community over here. We are just beginning obviously, yes, to do this. Kerala. Yeah, Your and they are South India is actually, very very hard, well served, very very hardworking dedicated, people. and focused to their service, हुँ, yes. job responsibilities. हुँ. Okay, can I continue? या श्योर वो बीच में मुझे कॉल आ रही थी। Okay. तो ये जो है हम we are over time now. Okay. 1 घंटा हो चुका है बट आई विल All क्विकली right. रैप अप विद यू। All right. Right. ठीक है, सो व्हाट्स योर So, आइडिया अबाउट about वुमेन this एम्पावरमेंट? organization that I started for my state. तो ये जो 20 years हो गए थे, year 2000 में मैं जब कॉलेज में करीना कपूर थी पू की तरह, एंड अब यहाँ सऊदी में एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. And life has taught me a lot, and I've matured immensely through my experiences, through my hard work and dedication. तो ये मुझे लगा कि हमारे स्टेट की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. So we came, a lot of family friends, few of our family friends came together and started the Global Jharkhand Welfare Association. ये एसोसिएशन हमारा लाइक जो 3 फैमिली मेंबर्स से हुआ, 3 फ्रेंड्स से हुआ. अब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर ये कोरोना पीरियड जो मैंने इसको वर्क किया, मतलब इसको हुँ, बिल्ट अप करने में, हुँ, ताकि अब हर स्टेट की यहाँ पे डेलीगेशंस आती हैं. हमारे स्टेट से हमारे हुँ, चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके हम इसको भी हुँ, कनेक्ट करें. एंड सऊदी अरेबिया इज़ अ क्रिटिकल कंट्री वेयर वी कैन जस्ट लिफ्ट अप. एंड हुँ, हमारे लोगों से जुड़ने की जो एक हंगर होती है, वो भी पूरी होती है ना कि अपने हुँ, लोगों से जो कंट्री छोड़ आए, हुँ, अपने लोगों से बिछड़ कर आ गए, और तकलीफ हर हुँ, वक़्त होती है, याद हमेशा आती है. तो हुँ, उनसे जुड़ने का एक रास्ता बना लिया जाए. तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एस्टैब्लिश्ड. और अब जैसा आपको बताया भी था कि हमारे उस इवेंट में हमारे फॉर्मर ब्यूरो चीफ, my mentor in Saudi Arabia, I would always give credit to Gazanfar Bhai because he allowed me that experience to. He allowed me an interview in the first go. कि हुँ, if I was passionate, वो break मिलना भी बहुत जरूरी था. हुँ, Prove myself that I can do. Journalism is a field where you have to work every day. एक हुँ, रात की दुल्हन होती है अखबार. हाँ, You हाँ, read it, अगले दिन उसकी अहमियत नहीं होती. हाँ, You have to हाँ, prove the other day round again. तो ये येस, चीज है कि you have to be on your merits. जब आप छोड़ देंगे तो आपकी हर जो है काम वो पीछे रह जाएगी. You have to keep the cycle going. हुँ, तो एग्ज़ैक्टली, जो है उनकी शुक्रगुजार हूँ. ये मुझे मौका मिला और अब तक यहाँ तक की जर्नी हुई. उन्होंने उस दिन हमारी जो पब्लिक इवेंट थी, ही अनाउंस दैट दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग, दैट अ वुमन initiated a state organization in a country like Saudi Arabia, because all through the journey कुछ लोग हैं आसपास जो they saw my pain and all my struggles or all my sacrifices also. एक टाइम ऐसा था कि हुँ, मैं बड़ी डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने जर्नलिज्म जो है खुद से छोड़ दिया,
खुद से मतलब जैसे इतनी दिन ब्रेक ले लिया, तो वो जो है कम बैक यू हैव टू स्टार्ट अगेन, वो जीरो से फिर से स्टार्ट होना है, फिर वही नॉर्मल सेक्टर से आपको फिर स्पाइरल अप होना है। तो ये थी हमारी। But it's a great achievement, right? Really, creating a state, मतलब अपने स्टेट के लिए कुछ करना है और फिर सऊदीया जैसे मुल्क में जो है अपने स्टेट का नाम ऊपर लेकर आना, that's a tremendous work. I absolutely admire अल्हम्दुलिल्लाह it, Shahzeen. बदल रही है बहुत। Thank you. अच्छा, Shahzeen, what word you use for women empowerment? Women empowerment हमने बहुत बात की है आज, but what the last thing you want to say about women empowerment? Women empowerment, we are, we can't say कि we are activists that कि हम वो फेमिनिज्म की तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जाए। हम Hmm. जितने लोग Hmm. women हैं, we are not feminists, we are only Hmm. trying to prove ourselves, and we are Hmm. only trying to help bring up the nation, our communities Hmm. in our Hmm. own capabilities. तो मेरी Hmm. मैसेज यही है कि women have to realize their inner strength, their Hmm. inner abilities and capabilities. पहले खुद को Hmm. पहचानिए कि आप क्या Hmm. कर सकती हैं, आप में अल्लाह ने क्या खासियत और कुव्वत डाली है। Hmm. Then utilize that to help other women around, to Exactly. help yourself and your family connect to the community and build the nation. तो ये Exactly. पहले खुद को पहचाने, believe in yourself, always be confident and move forward and Exactly. never stop, never stop. मुझे बहुत Exactly. जो मैंने 3 साल की ब्रेक ली, और जितनी जब जब लम्हा मेरी, क्योंकि मेरी लाइन के हिसाब से अब हर किसी की अपनी पढ़ाई की स्ट्रीम होती है, और जो वर्क सेक्टर होता है उसमें Hmm. कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी Hmm. Consistency is है, key to कंसिस्टेंसी। success always. अच्छा, इतना सारा इतनी सारी सक्सेस, इतने सारा फेम, इतने स्ट्रगल्स और सब कुछ के बाद सबसे आपका वाव मोमेंट कौन सा था लाइफ का? क्या कि वाव, ये मजा आ गया। वाह मजा आया था। मैंने बताया था अरब न्यूज में जब मैं थी, जस्ट एंटर किया था मैंने, हम्म। एंड आई वाज मूविंग, मैं ये मॉल्स यहाँ पे है ना, मॉल्स घूमते हैं, हम्म। विद माय हस्बैंड एंड माय डॉटर्स आई हैड गॉन टू द किंगडम मॉल इन द ईयर 2012 आई थिंक, हम्म। एंड वहां पर किसी ने बताया कि ये थर्ड फ्लोर है, इट्स अ कंप्लीट वुमेन हाँ, डोमेन। वुमन डोमेन, तो यस। हाँ, फिर वो मुझे शौक हो कि तन्वी मैं जाऊँ, एंड ही सेड लेट्स गो, तो ही केप्ट वन ऑफ माय डॉटर, आई टूक वन ऑफ माय डॉटर विथ मी, और वो उसकी लिफ्ट एक फ्लोर होती है लेकिन लिफ्ट अलग है, सीढ़ियाँ अलग है, एक आई डिडंट टेक द लिफ्ट बिकॉज आई वांटेड टू लिव दैट मोमेंट, क्योंकि हम इतने मतलब उस वक्त मतलब हमारी वो होता है ना सेकेंड डिपेंडेंसी वाली स्टेटस थी हर वुमेन की। हम्म। तो हम्म। जहाँ जाना हस्बैंड के साथ, जहाँ जाना, जो खाना पीना हर कुछ है, कोई अपनी मर्जी नहीं। तो हम्म। उस वक्त आई टुक द स्टेयर्स एंड एवरी स्टेप आई वाज क्लाइंबिंग ऑन दैट फ्लोर, आई वाज फीलिंग कि ये अचीवमेंट, आई वांट टू फील एंड एब्जॉर्ब दिस फील मतलब मोमेंट। फिर वहां गई एंड देखा कि फ्रॉम द शॉप ओनर्स टू द शॉप कीपर्स, फ्रॉम द क्लीनर्स, अबाया फ्री जोन था, एंड सब बहुत कंफर्टेबली, it was not looking like Saudi Arabia of that time then. So I was just हाँ। admiring, oh my God, who did this? Who made this change? तो वो ऐसा मुझे किसी ने बताया, प्रिंसेस रीमा, सॉरी प्रिंसेस अमीरा अल तवील, जो किंगडम होल्डिंग की शेयर होल्डर भी थी, तो वो जी, जी। उन्होंने पूरा थर्ड फ्लोर जो है वुमेन के लिए एक्सक्लूसिव बन करवाया है। एंड ऐसे ही फिर chai, I also ordered my coffee and sipped that coffee in 1 hour. मजे लेकर ऐसी मैं बस I'm on my own, मैं I'm the queen today. नमाज हुई, मगरिब की अजान हुई, एंड आफ्टर प्रेयर मैंने बस मजाक मजाक में हम कभी अल्लाह ताला से मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला ये जो प्रिंसेस है जिसने ये लेडीज के लिए, हम लोगों के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटी सऊदी जैसे जगह में कराई है, मुझे मिलवा दें इससे। हम्म। एंड देन दैट टाइम मैं वो दुआ करके खत्म भूल गई थी काफी दिन। अरब न्यूज हैड नॉट हैपेंड देन, मेरे साथ वो वाकया मुझे हम्म। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हम्म। एंड मुझे हम्म। थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम एक असाइनमेंट मिली थी, नायला आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन थी, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एक द लार्जेस्ट थोप बाय द लोमार थोप
एक विन किया था, तो उसकी एग्जीबिशन थी, हुँ, तो वहाँ वो कवर हुँ, करने जाना था। फिर वहाँ जब मैं गई थी, हुँ, तो आई वाज़ जस्ट सीइंग अराउंड, खूब एक्साइटेड थी कि गिनीज़ रिकॉर्ड का इवेंट है एंड आई एम कवरिंग दैट। तो हुँ, अ, वहाँ पे सडनली दे अनाउंस कि द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव, द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू अराइव। सब वो उथल-पुथल होने लगी इन टू अलाइन देमसेल्फ। हू इज द चीफ गेस्ट? बोले प्रिंसेस हुँ, अमीरा अल वलीद बिन अल तवील। तो जो मैंने सुना, एंड देन I jumped that day. Oh my God, Tanveer, Princess Amira is coming over here, and I'm going to meet her in person. Oh my, this is a golden moment. And when she arrived, I'm as मतलब Saudis, they are used to seeing so many princesses, and इनकी तो हर जगह आप picture में हाँ, हाँ। बात होती होगी। एंड आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, जो सुष्मिता सेन की क्राउनिंग मोमेंट उस तरह की एक्साइटमेंट है। एंड आई डिडंट नो देन कि वो क्राउन पहनी हुई होती हैं या क्लोक पहनी हुई होती हैं, खूब सारे लोग के साथ आते हैं आगे पीछे से उनके, ऐसा नहीं था। दे हुँ, वर सिंपल वुमेन, एंड ऑल द प्रिंसेसेस आई हैव मेट बहुत सिंपल होती हैं, डाउन टू अर्थ, दे आर डूइंग देयर जॉब। एग्जीक्यूटिव सूट्स में होती है, अबाए में हुँ, होती है। तो back I went back home, called my mummy, mama, you know what happened? आज मैं एक real princess से मिली। I told my daughters, मैं एक real princess से मिली, जो हम fairy tale books में पढ़ते थे। And that princess हुँ, Amira was so down to earth, and she extended her hand forward to my husband, and my husband was hesitant कि female से हाथ मिलाना है कि नहीं, but she is in her position, like if she's extending as a official, like a representative of the government or management. हुँ, So ये हुँ, we were, that was also one wow moment for me. And second था प्रिंसेस रीमा की स्टोरी। उन वो जब एंटर करी थी, तो बहुत साइलेंटली शी एंटर जस्ट एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन, एंड वी डिडंट इवन रियलाइज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एरो वुमन अवार्ड्स की, we didn't even realize that हुँ, she's around when someone said Princess Rima will address, and then we realized, oh my God, she's the princess, itni simple and itni hardworking, and she's brought about such dramatic changes in the society. So ये हम लोगों को सीखना है, to keep on working without having a like superficial flair about things. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके जी शज़ीन मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कोई ह्यूमैनिटेरियन मैसेज आप देना चाहेंगे सबको? The humanitarian message है कि अपनी कुवत से अल्लाह ने जो आपके सामने मकसद रखी है, be true to that. Selflessly, even if you have to strive, be true. God is talking, Allah is talking to us all the time. Listen to that inner voice. और एक लीडरशिप के लिए मेरी ये बात है, लीडरशिप फॉर वुमेन मैं ये पर्टिकुलरली बोलूंगी, लीडरशिप इज बियॉन्ड जेंडर। इफ यू कैन डू इट, जस्ट डोंट हेजिटेट, गो अबाउट डूइंग इट। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अकम्प्लिश्ड, तो वी हैव एन ओपन सपोर्टिंग सोसाइटी। एक और लीडरशिप के बारे में, इफ थैंक यू। देयर इज द women are capable, I request all the men in the family and men in the surrounding to please support the women. We are trying very hard. We are working 2 times एग्ज़ैक्टली, harder to make a mark. So एग्ज़ैक्टली। be it a father, हुँ, be it a son, a brother, or the men around in the workplace, please help and support, encourage the women if they are striving. This is my message. एग्ज़ैक्टली। And I also इ एक पोम मैं शेयर करना चाहती थी। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। Okay. Thank you for this opportunity, Maha. This poem is इट्स to प्लेज़र हैविंग यू।